हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर कंसेप्ट ऑफ द डे वीडियो, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से टॉपिक फ्रॉम द नंबर सिस्टम एंड स्पेशली फ्रॉम द रिमाइंडर सेक्शन, राइट। सो एक्चुअली में कहना क्या चाहता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, नाम के बारे में बात नहीं करेंगे। आई नो के बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्यों है, बट विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड least number which when divided by 6 leaves remainder 2 and when divided by 11 leaves remainder 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत पड़ती है। सिंपल, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, वी हैव टू फाइंड a number which when divided by 6 remainder is 2 and which when divided by 11 remainder is 3. We have to find the least number, right? Okay. And basically remainder theorem talk about the natural numbers, right? So you can write this number as 6 multiples, that is multiple of 6 plus 2, something like that. The multiple of 6 plus 2, right? And similarly it should be equals to multiple of 11 plus 3. So ultimately we have to satisfy the common value of m and k so that both are integers, right? So if I talk about that is 11k plus 3 minus 2 upon 6 equals to m. So this is 11k plus 1 divided by 6. Now we have to find the least value of k for which the m is integer. So if I put k equals to 1, so my answer will be that is 12 upon 6, the remainder is 0, of course, right? The point is that m will be 2, m will be 2. So k is 1, m is 2, that's it, answer आ जाएगा, right? So k is m is 2 actually, so 6 into 2 plus 2, so 14, and similarly k is 1, so 14. So this whole concept is known as the Chinese Remainder Theorem. I hope it is clear to everyone, right? And you can follow Quantprep 99 if you want to learn such kind of concepts in the upcoming videos. So bye, take care, and please do subscribe Quantprep 99.